Tell me something about yourself. Sir, I'm Ankur Raj. I am freshly qualified chartered accountant. Starting from my professional journey, I have done articleship from P. Kapoor and Company. During my articleship, I have great opportunity to learn in diversified field. I have experience in statutory audit, direct taxation, indirect taxation, and internal audit. In statutory audit, I have done fixed asset verification, stock verification, and IFC testing, and also I have and statutory limited review of many listed companies. Okay. What type of observations you had during your client observations? In stat Particularly audit, external audit or internal audit, what were your major observations you have done? Yeah. Stat audit, I when I visited a client office, which is a manufacturing company, it was winter time. I saw that there are many oil heaters which were installed in the factory. I asked their employees that this purchase has been made for all the location of the company. They said yes. This purchase of oil heater has been done for all the location. But when I checked in fixed asset register or fixed asset schedule, I didn't find any entries of that heater. So this was one of my major observation in stat audit. During internal audit, I had there were some related party transaction which which was done by a manager level employee. He was purchasing from one of his relative without without any requesting for quotation or vendor without any vendor verification. Right. And one more Uh, observation is stat audit, sir, that once I was auditing an school, there was a and in that school I went for a event, but when I was auditing that school, I didn't find any income related to that event. So I informed my principal that income related to that event has not been shown in the accounts. So it was my observation. do you know what is rollback and roll forward? This rollback procedure is applied on stock on verification of stock on verification of stock. Rollback procedure is applied when we uh, during next month in April we go back we minus we subtract we subtract sales and we subtract sales and add purchases. We subtract sales and purchases to reach at closing stock at 31st Jan 31st March. Uh, what are the procedures we will apply while doing the inventory audit? So procedure we will apply. We will apply cutoff procedure to separate to arrive at the arrive at the stock at 31st March. Then for completeness, we will for completeness we will check goods receipt note and we will tally trial balance to the specific ledger and trial balance to a specific ledger and a specific inventory account. For right and obligation, we will check invoices to arrive at the conclusion that this stock belong to companies or not. For existence, we will check a goods receipt note and goods receipt note and eBay bill to arrive the existence of inventory. Right. I wanted to know what are the verification procedures you will do while auditing trade receivables? Sir, first we will match
trial balance to first we will match trial balance to respective ledger, so that we can check that debtors are complete. For thereafter we will send external confirmation to check the accuracy of the balances. Many times it happens that we do not receive confirmation from our debtors. So we will do subsequent testing in next month or in 10 days. We'll see whether any payment is received from those vendor or not. And if any payment is received in regard of any transaction, then we will verify. Then we will reach at a conclusion that these data are real. Thereafter, we will request debtor aging report from management to arrive at to see whether debtor are properly disclosed in the accounts or not. If there is any debtor which are more than 1 year old, we will check whether their provision in this on that regard has been made in the accounts or not. And also, sir, if there is any discrepancies in regards to this, we will ask if there is any dispute between the amount between between company and the debtor. We will ask the legal team about the probability of winning the case or winning the dispute in our favor. And we'll check the provision regarding that amount. What is the audit risk? Audit risk is a combination of product of inherent risk, control risk, and detection risk. What is detection risk? Detection risk is the risk that the material misstatement will not be detected after applying a substantive procedure. Inherent risk? Inherent risk are those risks which can be reduced but cannot be eliminated. These inherent risk may affect a single business process or a whole business. What is management override of controls? Management override of controls, sir. Management override of controls. Aman, you will note down all the questions. Huh? Everybody will note down all the questions. Okay, which will be discussed. Yes. What is management override of controls? Management override of control is the risk is the control deficiency when a person authorize a transaction or when a person authorize a transaction or authorize a transaction or sorry, I'm not able to recall properly. Note this question, okay? Yeah, no problem. Difference between Ind AS 115 and AS 9? Difference between Ind AS 15 and sir, major difference is regarding AS. Difference between is that during in AS9, in AS9 construction service there was different AS for construction services, but in AS 115 we in construction service we recognize revenue by in AS 15. Anything else? There in Ind AS 15 we apply 5-step model, which was not which was not there in AS 9. This question needs to be done properly. Difference between both. Right, note these two questions you note. Just now, no? You can take a notepad also. In difference between Ind AS 115 and AS 9. And second, Management override of control.
Second, which question was that? Which question was that? Management override of control. Right, management override. Management override. Okay. You all note the questions which you are able to answer and which you are not able to answer. Okay, without revision. So which questions you are able to answer without revision, that means that you already know this answer and you do not have to invest the time in knowing this answer again and again and wasting your time. Which answer you don't know, now you know that this answer you need to focus. That is the benefit. Okay. Only audit revenue. The audit revenue by we will ask. I'm not able to recall it. This is very easy question actually. In revenue, what do you do generally? Sir, actually, my flow is broken, so I'm not able to recall it. What are the things we do in revenue? Like vouching, verification, analytical procedures. These are the things that we do. eBay bills, sale register you check, 26 AC you check. Not difficult. Right. What are the things that we'll do while checking revenue of a company? Yeah. Sir, while checking revenue, we will ask for sales register to establish whether the sales has been made. For that, we will ask for on materiality basis. We will ask for some invoices, and from that invoices, we will see that whether proper GST, whether revenue has been recognized or not. Whether in respect of that invoices, whether any inventory whether any inventory has been released from store or not. For that, we can check eBay bill, that goods has been transferred from the goods has been transferred from the entity. We can also check 20. We can also check 26. We can also check 26 A's, so that we can also check 26 A's, because there has been if we made online sale, there has been a provision for TDS deduction for online sales. So we can conclude from that online sale, if sale has been made or not. If we are providing professional services, then 26 A's will also be useful for that. And also we will check whether debtor has been increased in respect of sales made by the company. We will also check debtor to establish a relationship between sales and the trade receivable. Good. TOD and all you can do. Okay. Cutoff checking, revenue cutoff. How do we do revenue cutoff? Sir, in revenue cutoff, sir, I'm not able to recall. Write it down. Revenue cutoff. Write it down. You will improve. By 24 hours only you complete this revenue cutoff. What you are saying, what everybody out here, you know some answer, you do not know some answer. What you do not know, you make sure you do it within 24 hours. Keep it a deadline. You don't have that much of time. You will remember that answer within 24 hours. What you know, you don't need to do it till the campus is over. What you know, you will not be doing it. जो आपको आता है वो आपको नहीं करना है, और जो नहीं आता आपको 24 आवर्स में करना है. एज सिंपल एज दैट. जो आता है आपको तो कैंपस तक नहीं करना है, कैंपस के बाद देखना है. समझ गया है क्या ना? कोई चीज आता है आपको तो उसको आपको देखना नहीं है, और जो चीज नहीं आता है उसको क्या करना है? क्या करना है उसको? 24 आवर्स करके खत्म करिए. विदिन 24 आवर्स कीप इट अ डेडलाइन. कैसे भी करके खत्म करिए. खाना मत खाइए, कुछ नहीं करिए, सोइए मत, बट 24 आवर्स का एक टाइम लिमिट रखिए कि इतना क्वेश्चन सबको करना है भाई, कैसे भी करके. ओके अमन, यू गॉट द पॉइंट ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अमन, कैन यू मेंबर? या क्या बोलिए अमन. सर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है 27 को मंडे. वो हम लोग करवा देंगे उसका. नहीं कोई दिक्कत नहीं. आप पहले आते तो आपको रिसोर्स देते, तो वी विल अलॉट योर मेंटी आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम. पर अभी जो क्वेश्चंस हो रहा है ना, वो क्वेश्चंस को आप लिखते जाइए. कितना सीखिए, कितना आ रहा है आपको, कितना नहीं आ रहा है. एक आपको आप साथ ही साथ मेल कर दीजिए, अभी टाइम बचेगा. मेरा मेल आईडी है. जो कैंपस में आपका कंपनीज आया है, डेट्स आया है, वो हमको मेल करिए. टाइम सेव होगा आपका. ठीक है. चलिए अंकुर,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू कट ऑफ. ओके, रेवेन्यू कट ऑफ आप नहीं बता पा रहा था, कोई को ट्राई करना है रेवेन्यू कट ऑफ कैसे चेक करता है? एनीबडी वांट्स टू ट्राई रेवेन्यू कट ऑफ? 2 or 3 questions he was not able to answer. Okay, revenue cut off, management override of control, or Difference और between क्या था? Ind AS 15 and AS 9. AS Difference 9. between Okay, Ind AS 15. difference between Ind AS 115 and AS 9. Anybody wants to try these 3 questions? Nita Robbins. Sir, Monica, you want revenue to try? cut-off. Yes. Yeah, so revenue cut-off, you check sales after March 31st. Then you will also check the sales return and with the GSTR 1 return. What we do in the revenue cut off? So we check the sales, whether there are any sales that are booked after the financial year, after Right. 31st March. What will be the procedures in that? That I understood that we checked it. What will we do? What are the procedures we'll apply in cut off procedures in revenue? Yeah, we'll check this any subsequent sales after March 31st. Then we'll check the sales returns, whether the sales returns are are disclosed in the GSTR return. Whether the sales return belong to the financial year. Priyanka Jain, you want to try? Priyanka Jain, revenue cut off. I want to try. So Yes. first of all, I will check Incoterms with the sales invoice and proof of with e-way bill and proof of delivery. Whether it is for checking accuracy of the invoice, and then I will check. I will take a few samples of the invoice and will check whether it is falling out after 31st March or not. If it is, then I will reverse the entry, and if it is not, then I will check further sampling. And if I will keep low performance materiality for revenue cutoff checking, because it is a high risk area for the overall for the audit of P&L items. So yes, this is how I will check revenue cutoff. Anybody wants to try? Monica, revenue cut off? Do you have any idea revenue cut off? Monica Gupta, do you have any idea? Yes, sir. We will check sales at the end of the March and sales made at the beginning of April. And if there any sales returns are there, then we will check that. Now, in the revenue cut off, what you do is that before the 31st March, you will take 15 to 20 invoices. It depends, okay? You will take some invoices and you will do vouching. As you do vouching, here also you do vouching only. 15 to 20 invoices before March, 15 to 20 invoices after March. And you do vouching. Vouching you have done, na? Vouching, tick, 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 tick. Vouching everybody has done. So you will do vouching only. You will take the invoices. Now in the invoices, now 15 to 20 invoices, it depends on the risk of material misstatement. Depends on the organization, depends on the risk. What is the risk out there? So this depends on the sampling process. So I'm giving an example. We take 15 to 20 invoices before March and 15 to 20 invoices after March. Now you just check whether this invoice which you have, you will check with the freight inwards bill, e-way bill, everything you will check whether the invoice is raised and the goods are also received by the recipient before 31st March. If it is yes, then no revenue should be reversed. If it is not, if the goods are received after 31st March, then you have to reverse, you will ask the management to reverse the revenue. That is revenue cut off. You are just checking whether the revenue is booked in the correct period or not. As simple as that. कि revenue सही पीरियड में बुक हुआ है कि नहीं हुआ है. ऐसा तो नहीं है कि बाद पीरियड में बुक हो गया. मान के चलिए हम अपना एग्जांपल देते हैं. हमको 25 मार्च को कोई जीएस बैंक का पैसा दिया. हम उसको सर्विस देता है आफ्टर 31 मार्च. वो बोला कि मेरा भी एग्जाम चल रहा है, तो हम अभी आप पैसा ले लो, पर हम सर्विस आपका लेगा 10 दिन के बाद. वो 10 दिन के बाद लिया, तो जब वो सर्विस तो बाद में लिया ना, रेवेन्यू बाद में रिकॉर्ड होगा. पैसा वाली अभी ले लिया. You got my point ना? This is the way कि सर्विस तो बाद में लिया, जब वो सर्विस लेगा तभी रिकॉर्ड होगा वो रेवेन्यू. This is what we check in the revenue cut off कि वो गुड्स रिसीव हुआ है क्या, गुड्स एंड सर्विस कब रिसीव हुआ है. एक्चुअली
अगर वो 31 मार्च के बाद आपका रिसीव हो रहा है, if the goods or services is received after the 31st March, then naturally we will record the revenue in the next year, next financial year. This is a cut-off procedure. We do invoice testing. सेल्स रिटर्न वाला जो बात था, भोजन बिजनेसमैन क्या करता है, दे बुक सेल्स राइट नाउ and after 31st March they do the sales return. So we are just checking whether this is a bogus sales return or actually a sales return which is genuine. So whatever sales returns is happening after 31st March, हम लोग बस चेक करेगा whether that is a genuine sales return or not. We will ask the management कि what is the reason of sales return. We will check the documents properly, approval है कि नहीं है, तो those approval process है, एक्सेल शीट में सब है, एक रोड गो थ्रू करेगा, मेरे इजी है। तो सेल्स रिटर्न देख लिया और एक आपका इनवॉइस टेस्टिंग करता है, 15-20 इनवॉइस अभी का, 15-20 इनवॉइस बाद का, बस उसको देख लिया कि गुड्स एक्चुअली, कॉन्सेप्ट समझ लिए, कॉन्सेप्ट इज द की, कॉन्सेप्ट आता था आंसर बता देगी उसको कि रेवेन्यू बुकिंग सही पीरियड में हो रहा है कि गलत पीरियड में हो रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर ना, समझ ना, क्लियर ना, ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम। देखिए communication skill is very important. Communication skill is not using ICAI language, it is using the language that even a layman can understand. You can make somebody, a class 12 person also understand the language, then that is communication skill. समझ में आया ना? Even who has no idea about the commerce and you are able to make him understand in a very simple language what is revenue cutoff, that is communication skill. Cutoff क्या होता है, सेम पीरियड में रिकॉर्ड होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आप बच्चा को समझा रहे हैं तो बच्चा का लेवल में जाकर इसको समझाना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर को समझा रहे हैं, अपना जो क्लाइंट को समझा रहे हैं और क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता कॉमर्स क्या होता है, तो आपको उसको लेवल में जाके समझाना पड़ेगा। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल एंड दैट इज व्हाट इंटरव्यूअर भी देखेगा आपका, हाउ वेल यू आर इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स। व्हाट यू नो यू से आई नो, व्हाट यू डोंट नो से यू डोंट नो, बट व्हाट यू नो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट पर्सन वेरी प्रॉपर्ली। समझ रहे ना? Communication skill is about explaining the things to other in a very very simple language. Get my point na? Clear? Unni, anybody na? That is very important. That's why I tell you, to improve your communication skill, I always say you need to improve your ability to explain things properly to others. ऐसा होना नहीं चाहिए आपने एक बार एक्सप्लेन किया और उसने पूछा प्लीज रिपीट प्लीज रिपीट प्लीज रिपीट। अगर आप में वो टैलेंट है कि आप एक ही बार में लोगों को समझा सकते हैं चीज, दैट इज अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल। वो चीज इंप्रूव करिए। इसके लिए ना इंग्लिश चाहिए ना हिंदी चाहिए, आपको समझाने का कला चाहिए। समझ? अमन, अंशुल, एवरीबॉडी राइट, उन्नी, मोनिका, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप चीजों को बहुत इजी करने का कोशिश करिए हमेशा। जब आप समझ लेते हैं ना और उसको सोचिए और हम इजीली कैसे उनको समझा सकते हैं सामने वालों को, तो ब्रेक डाउन करिए चीजों, ठीक है? अब आप समझ आएंगे। अंकुर आप बोलिए अब रेवेन्यू कट ऑफ में क्या होता है? We will take sample of invoices before 31st March, and we will take sample and we will do vouching of that invoices, and we will do vouching of we will see whether the delivery against those invoices has been made before 31st March or not. If the delivery has been made against those invoices has been made before 31st March, that is okay. We will not ask management to reverse the revenue. But if the revenue delivery has been made after 31st March, after cut-off date, we will ask them to reverse the revenue. Good, very good. And sales return also you need to say good. Now you understood the point now. Okay, next question. How will you check whether this is an identifiable lease or not identifiable asset? What is the definition of an identifiable asset as per the Ind AS 116? Sir, identifiable asset is the asset. I'm not getting proper term, sir. Anybody wants to answer? Identifiable asset. Neetha Robbins. Okay, 9. Yes, Priyanka. So first of all, supplier does not have a substitution of asset. So supplier does not have a right of substitution of the asset, and the full benefit are taken by only lessee. So if it is physical asset, then 100%, and if it is intangible asset, then 90 to 95% benefit are taken by only lessee. फिर से बोलिएगा, एक बार फिर से समझाइएगा। If asset is physical, then 100% benefit are taken by lessee only, and if it is a intangible asset, then 90 to 95%
benefits are taken by lessee only, and there is a no substitution right by lesser. There is no right of substitution with lesser. मतलब उसके पास substitution right नहीं है asset का. All the benefits are taken by lessee only. Then there is a identifiable asset. If lesser can exchange the asset, then there is a no identifiable asset in the contract. Anybody wants to try identifiable asset? Neeta Robbins. As I Index couldn't पढ़ा? complete last Index. No. Index नहीं किया आपने? Good, good. So there are two terms in identifiable asset. Okay, the customer has substantially used all the economic benefits of the asset. Customer ने पूरा ही यूज कर लिया asset को. And the supplier does not have the right to substitute the asset after a point of time. ये दो ही चीज है उसमें. एक बार वो go through कर लेना कि तो कस्टमर ने पूरा यूज कर लिया एसेट को और सप्लायर अब आपको एसेट चेंज करके नहीं देगा. ये दो ही चीज है. आइडेंटिफिएबल एसेट, थिंक ऑफ इट एज अ स्पाउस. ये मैं कराया था नीता रॉबिन्स. थिंक ऑफ इट एज अ स्पाउस. सप्लायर इज योर ससुर जी. तो कस्टमर इज यू. For example, Raman is customer, spouse is a identifiable asset, supplier is Sasurji. So the customer has used all the benefits of the asset, substantially all the economic benefits of the asset over a period of time. So पूरा use कर चुका है. And the supplier cannot change the asset for you. He does not have the right to substitute the asset for you after a point of time. ये हो गया identifiable asset. For example, क्वेश्चन यहाँ पर आएगा घुमा फिरा कर कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैब सर्विस दिया. घर आने जाने में दिक्कत हो रहा था एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर वाज फेसिंग डिफिकल्टी. एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर हैज गिवन द एम्प्लॉय अ कैब सर्विस. इज इट अ लीज और नॉट? व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा? इज इट अ लीज एग्रीमेंट? 1 साल का है कि गाड़ी आते रहेगा जाते रहेगा घर जाएगा. नो. व्हाई? Because it's a staff value it's a staff value expenses, and there is no lease act, and there is no right and control of the employee over the cab. Employer can substitute the asset anytime if he wants. तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट एन आइडेंटिफिएबल एसेट आल्सो. गाड़ी भी चेंज होते रहेगा, ड्राइवर भी चेंज होते रहेगा, और वो गाड़ी को पर्सनल पर्पस के लिए तो यूज नहीं कर सकता है ना. तो वो गाड़ी को पर्सनल पर्पस के लिए तो यूज नहीं कर सकता है. दैट इज आल्सो द थिंग. The customer has substantially used all the economic benefits of the asset. The customer has substantially used all the economic benefits of the asset. That is the thing. All the benefits of the asset उसने यूज कर चुका है. मान के चलो अब जो घर में रहता है, बीएमआई में रहता है, घर को पूरा यूज कर लेता है. राइट. अभी हम लोग घर में दुकान चला के रखा अपना. राइट. ये तो मेरा खुद का घर है. तो घर को ये दुकान बना ली, घर को कुछ भी कर सकते हैं, तो घर है मेरा. राइट. कस्टमर हैज यूज्ड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द एसेट. द सप्लायर does not have the right to substitute the asset after a point of time. पर वहां पर तो गाड़ी चेंज होते रहता है, वही चीज है. उसको यूज भी नहीं किया तो वहां पर लीज नहीं है. अब मान के चलो आप घर का एग्जांपल लो, तो घर में आप कस्टमर पूरा यूज कर लिया एसेट को, और सप्लायर कौन है? बैंक वाला है. तो बैंक वाला को बोलिए हम तो लोन चुकाएंगे पर आपको घर दूसरा दीजिए. ऐसे थोड़ी ना होगा. घर तो बदलते नहीं रहेगा आपके लिए ना, कि हमने 2 साल यूज कर लिया अब दूसरा घर में जाएंगे. ऐसे पॉसिबल नहीं है. हाँ, वो से अलग टाइप से है, पर वो अग्रीमेंट में बन जाता है वो घर जो भी है. तो इट्स अ लीज एग्रीमेंट टाइप का हो गया. राइट. ऐसे समझना, ऐसे समझिए. पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर. व्हाट इज द एग्जेम्पशन टू द लीज? Exemptions to the lease short-term asset and low value asset are exempted from the लो lease. वैल्यू लीज एंड दूसरा Short-term asset, हाँ short-term lease. हाँ, लेस देन 12 months. ठीक है. एक चीज आप लोग देखिए, एक चीज आप लोग इम्प्रूव करिए अपना, वो है अगर आपने इतना लाइफ में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया कोई डिबेट कंपटीशन, यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कंपटीशन एंड दिस थॉट ऑफ द मॉर्निंग, थॉट ऑफ द डे, जो भी है आप लोग ने नहीं किया, एंड यू नो दैट, ओके, एंड दैट इज ओनली स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्लियरिंग एन इंटरव्यू. आप एक चीज करिए, आपको अगर अपना नॉलेज स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करना है तो बोल बोल के ही होगा. वो इंग्लिश मूवीज देख के नहीं होने वाला है. माँ को बोलता देता है. बोलने वाला जो चीज होता है वो बोल के ही होता है. वो आप कोई बोलता है ये मूवी देख लो, उस देख लो, वो देख लो, नहीं.
वो सब मूवी देखने में आ जाएगा, मूवी देख लेगा। आपका बोलने का जो उसको बोलना है इंग्लिश में, वो बोल बोल के ही इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है। तो बोला बोली करने से जितना जल्दी, जितना ज्यादा इंग्लिश बोलेगा, जैसे एक आंसर पकड़ा कि कोई भी आंसर पकड़े, आंसर को पढ़िए और ऐसे अपने जूम मीटिंग करिए, जूम मीटिंग करके खुद ही को आंसर बोलिए, ऐसे करके यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आप और आंसर को इंग्लिश में बोलिए, किसी को ऐसा लग रहा है आप किसी को सुना रहे हो आंसर को, आप देखना धीरे धीरे अपना पॉइंट ऑफ टाइम आप देखिएगा आपका फ्लो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा और आप फटाफट बोल पाएंगे। अब आपको बता रहे हैं, ठीक है, हम यूट्यूब चैनल किए थे 11-12 महीना पहले, 5 मिनट का रील बनाने के लिए भी 2 घंटा लग जाता था, 1 घंटा, कुछ ना कुछ बोल गए, होता है इनिशियली, होता ही सबके साथ। तो पर रुके नहीं, पर कंटिन्यू 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 करते करते अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो गया, पता ही नहीं चला। तो इवन 5 मिनट का रील के लिए भी 1 घंटा लग जाता है कंटेंट को, पर थिंग इज दैट करते 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 आपका इंप्रूव होगा। तो ये चीज याद रखिए, आपका अगर स्पीकिंग स्किल्स का प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश मुंह से नहीं निकल रहा है, इससे ये तभी मुंह से निकलेगा अगर आप कंसिस्टेंटली 6 से 8 घंटा 9 घंटा आप खाली इसमें ही इन्वेस्ट करिए। आंसर्स को पढ़ लीजिए, जो आपके पास अंग्रेजी है उसको बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, आपको देखना अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मैं बताऊं कितना घंटा लगेगा आपको स्ट्रॉन्ग करने में, 50 से 60 घंटा से ऊपर लगेगा ही नहीं। अगर कोई 50 से 60 घंटा कंसिस्टेंटली कर लिया ना मेहनत, 50 to 60 आवर्स ऑन जूम, ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, 50 to 60 आवर्स, उसका इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। प्रियंका जैन का काफी इंग्लिश इंप्रूव हो गया, राइट? क्या प्रियंका जैन, राइट? तो इंग्लिश ऐसे इंप्रूव होता है, आप डेली डेली प्रैक्टिस करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको 50-60 घंटा चाहिए, आप अगर डेली का 8 घंटा अगर आप बोलते रह रहे बोलते रह रहे बोलते रह रहे, आपका इंग्लिश अपने भी 50-60 घंटा ज्यादा लगेगा इंग्लिश इंप्रूव करने में। इंग्लिश तो बहुत इजी लैंग्वेज है, कोई और दूसरा लैंग्वेज होता तो टाइम भी लगता, समझे? इंग्लिश इजी लैंग्वेज कंपेयर टू अदर्स, है ना? और अपना तो बचपन से यही करते आए हैं, ऐसा भी नहीं है, राइट? कोई और तो लैंग्वेज है नहीं, स्कूल में हो सकता है कि आपका ये 3rd लैंग्वेज होगा, पर फिर भी इंग्लिश तो थोड़ा बहुत आता ही है सबको, और इंग्लिश में पास होके निकले हैं। ऐसा है, खाली बोलने का ही प्रॉब्लम है, लैंग्वेज तो समझ में आता ही है, बोलने में ही दिक्कत आता है सब बात। तो वो कैसे इंप्रूव होगा, कैसे इंप्रूव होगा इंग्लिश? Continuous speaking Practice on Zoom. and continuous speaking. अगर आप डेली का 6 घंटा प्रैक्टिस करेगा ना, पढ़ लीजिए और अब जूम में प्रैक्टिस करिए, रिकॉर्ड करिए, और फिर देखिए खुद को कि मैंने कैसे बोला और कैसे इंप्रूव कर सकता है। आप देखना 50-60 डेट्स में पूरा इंग्लिश मैन बन जाएगा, हम बता रहे हैं। पूरा इंग्लिश, इतना इंग्लिश निकलेगा मुंह से जितना आदमी निकाल नहीं पाएगा, बस मुंह से बहुत इंग्लिश निकलेगा आपका। पर आपको डेली का 5-6 घंटा इंग्लिश में बोलना है, लैपटॉप के सामने बैठ के। आप ऐसे करिए, आप यूट्यूब चैनल सिखा रहा है कुछ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर कुछ है, तो आप ऐसे, पर आप कोशिश करिए अपना आंसर ही पढ़िए, जो भी आंसर है वही पढ़ के उसको इंडेक्स 115 ES9 में क्या डिफरेंस है इसमें, एक आंसर 3-3 4-4 बोलिए, आपको देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इंग्लिश हो जाता है, कोई रोक ही नहीं पाएगा आपका इंग्लिश को, समझे? तभी आपका दिख रहा है ना, आपका इंग्लिश रुक रहा है, ऐसे करके ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज का रिजेक्ट कर देते हैं लोग इंटरव्यू में, समझे? सेम लिंक में आ जाइए आप लोग सब जन, ठीक है? और भी आपको क्वेश्चन लेते हैं, हाँ ठीक है, सेम लिंक में आ जाइए सब जन।